Assalamu alaikum students, welcome back to EWIC High School homework series. Kids, in today's video, we will complete chapter number 2, Human Nervous System, MCQs, short question answers, constructed response questions and investigation part. So let's begin the video. Let's hop on to page number 22 from where our MCQ section starts. First MCQ is the neuron which decide about the action for a certain stimulus. वो न्यूरॉन जो कि डिसाइड करते हैं एक्शन एक सर्टन स्टिमुलस या एक सर्टन एक्शन को परफॉर्म करने में those are all of the above. सेंसरी न्यूरॉन भी इसमें आते हैं, मोटर भी एंड इंटर न्यूरॉन भी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव्स मैसेजेस. न्यूरॉन का वो पार्ट जो कि मैसेज को रिसीव करता है आर दैट इज बच्चों डेंड्राइट्स. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेंड्राइट्स. दीज आर बेसिकली मैसेज रिसीवर्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय. हार्ट बीट आपकी कंट्रोल की जाती है by the part of brain that is called medulla oblongata. Next is many axons present side by side and enclosed in a common sheath form are called nerves. They form nerves. Okay. Next is sensory neurons carry message towards. Sensory neurons कहाँ मैसेज पहुंचाते हैं? So the correct option is option D, brain and spinal cord. Sensory neurons brain और spinal cord तक आपका जो मैसेज होता है, जो एक्शन परफॉर्म करना होता है, उसको पहुंचाते हैं. Number 6 is which part of brain is involved in precise and accurate body movement. कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है बॉडी की एक्यूरेट मूवमेंट में? Correct option is cerebellum. Option A. Question number 7, last MCQ is which when you have a toothache you feel pain because. अगर आपके दांत में दर्द होगा तो आपको जो पेन फील होगी वो क्यों फील होगी? क्योंकि जो कैविटी है, जो कीड़ा लगा हुआ है, वो आपकी नर्व्स तक पहुंचेगा और नर्व्स आपकी ब्रेन को ये पैगाम पहुंचाएंगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एमसीक्यू सेक्शन. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड. बेसिकली क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने हमसे 3 डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पूछा है. सो लेट्स बिगिन विद मिड ब्रेन फंक्शंस. फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडिंग मिड ब्रेन फंक्शंस and then start writing it in paragraph or point wise. The midbrain is a part of the brain that helps in controlling movement and also helps us to react to things we see and hear, like turning our head when we hear a sound. It also helps us stay awake and alert. All right. So next point is hypothalamus. Right function of hypothalamus. Okay. So same, you have to write the heading first and then you will write down its functions. The hypothalamus is a small but very important part of the brain. It controls things like hunger, thirst, body temperature and sleep. It also helps in keeping our body balanced. And also, bachcho, remember that hypothalamus is a peanut-sized part within your brain. Okay. Next comes spinal cord function. The spinal cord is like a long tube that connects the brain to the rest of the body. It carries message from the brain to the body. It also helps us react quickly in emergencies, like pulling our hand away from something hot even before we think about it. And also it is protected by our backbone. Question number 2 is differentiate between
receptors and effectors, B. neuron and nerve, C. sensory neuron and motor neuron, D. cerebrum and cerebellum. So first let's begin with receptors and effectors. You have to draw a margin line and then on the one side write receptors and the other side write effectors. Okay, and let's begin the part. So receptors are special cells that perceive or detect changes or stimuli like heat, light, sound, touch, etc. They are found in our sense organs like eye, ear, skin, nose, and tongue. They are found in our sense organs like eye, ear, skin, nose, and tongue. Examples: skin receptors feel something hot. Okay, receptors बच्चों क्या होते हैं? receptors वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में अगर कोई चेंज हो रहा है या आपकी बॉडी कोई चेंज फील कर रही है तो फौरन से आपको अलर्ट करते हैं. What are effectors? Effectors are muscles or glands that respond to the message from the brain or spinal cord. They are found in muscles and glands all over the body. Examples: muscle in the hand move it away from the hot object. Okay, तो बच्चों they both work together. रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स. रिसेप्टर्स क्या होता है कि जब आप कोई गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो आपकी बॉडी आपकी ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि रिसेप्टर्स आपकी ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जिस चीज को आपने हाथ लगाया है दैट इज हॉट. ओके, एंड यू हैव टू रिमूव योर हैंड फ्रॉम इट. तो आपके रिसेप्टर ने आपकी ब्रेन को अलर्ट किया. एंड नाउ इफेक्टर्स का रोल आ जाएगा कि फौरन से आपकी ब्रेन जो है वो मैसेज भेजेगी इफेक्टर्स को, उन मसल्स या ग्लैंड्स को कि फौरन जाओ और वो जो हाथ है उसको वहां से हटा लो. Okay, so these both work together. Next is neuron and nerves. Neuron और nerve क्या होते हैं? A neuron is a single nerve. Always remember, neuron एक single nerve को कहते हैं. It carries message in form of electric signal. It is part of nervous system. Examples: sensory neurons, motor neurons. Neuron is one cell. Always remember. And what is nerve? A nerve is a bundle of many cells. ठीक है, ये ग्रुप होता है, एक बंडल होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स का. It carries message to and from the brain and spinal cord. ये पैगाम पहुंचाता भी है और पैगाम वापस भी लाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. It connects the brain and spinal cord to different parts of the body. और ये ब्रेन को और आपकी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्टेड रखता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपकी बॉडी के बाकी तमाम पार्ट से कनेक्टेड रखता है. एग्जाम्पल: sciatic nerve in the leg. ओके, तो बच्चों यहाँ नीचे इफ यू कैन सी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने वन लाइनर बताया हुआ था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं, सो दैट अगर आपको सिर्फ ये मेमोराइज करना है कि इनका क्या मकसद होता है तो यू कैन रीड इट ओवर देयर एंड लर्न. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron carries message from sense organs like eye, skin, ears to the brain or spinal cord. Helps us feel things like touch, pain, heat or cold. Example: feeling a hot object. Whereas motor neuron carries message from the brain or spinal cord to the muscle or the glands. Help us move our body parts by sending signals to the muscles. Examples: moving your hand away from the hot object. Alright, so आप यहाँ नीचे इसको अगर रीड करेंगे, it is written:
Sensory neurons send messages to the brain, whereas motor neuron sends messages from brain to the body. Okay, one liner इसका ये meaning है. Next comes last difference is cerebrum and cerebellum. Cerebrum. Cerebrum, it is the largest part of the brain. It helps us think, remember, speak and make decisions. It controls voluntary actions like walking, writing and talking. One liner explanation is that cerebrum helps you in thinking and decision making. Whereas cerebrum is the smaller and lies under cerebrum. It helps us balance our body and coordinate our movements. It controls smooth and steady movement like riding a bicycle or running without falling. Cerebellum helps us to make balance and movement. Question number 3. Write a note on central nervous system. Okay. So students, whenever they ask you to write a note, it always means that you have to write it in a paragraph. Okay. One thing. So what you can write here is, I know that it looks long, but आप इसको जब understand करके पढ़ेंगे, that it will be very easier for you. So the central nervous system is the main part of our nervous system. It controls all the activities of the body. It is made up of two main parts, brain and spinal cord. The brain is the control center of the body. It helps us think, learn, remember, move and feel. It is protected by the skull. Spinal cord. The spinal cord is like a long, thick wire made of nerves. It connects the brain to the rest of the body and carries messages between them. It is protected by the backbone. Okay. So बच्चों जो spinal cord होती है, cord always means cable, wire. Okay. So याद रखना spinal cord is the wire that connects your brain to the rest of the body and it is protected by your backbone. ये backbone के अंदर होती है. Okay, so इसका one liner ये है कि the CNS, which means Central Nervous System, works like the boss of the body. It controls everything that we do, whether we are walking, talking or even sleeping. Next comes identify and label the following diagram. Okay, this gets very easy. You can complete it from your book also. I am pasting a picture over here. If you can see here it. Okay, so kids, now you have to redraw this diagram on your notebooks, alright, and label it. And let's move towards constructed response questions. Alright kids, now this is your constructed response question number 1. The table below shows the list of your daily activities. Write the name of the part of brain, forebrain, midbrain or hindbrain, which is controlling this activity. Alright. तो अब आपने बताना है कि sleeping, brushing your teeth, taking the breakfast, balancing your body, taking deep breaths, ये सब चीजें किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में आती हैं, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में या हिंड ब्रेन में, या कौन इनको कंट्रोल करता है. सो फर्स्ट इज स्लीपिंग. Sleeping is always controlled by hypothalamus, which is present in the forebrain. Okay, kids, brushing your teeth is controlled by motor cortex, which is in the forebrain. Okay, next is taking the breakfast. Taking the breakfast is controlled by thalamus, hypothalamus and cerebrum, which is present in the forebrain. Okay, next is balancing your body.
Kids, balancing your body is controlled by cerebellum. Kids, balancing your body is controlled by cerebellum and that is located in the hindbrain. Last is taking deep breaths. Your medulla oblongata and pons located in the hindbrain with coordination motor cortex in forebrain helps you to take deep breaths. Alright, so with this we have completed our constructed response question number 1. Let's move towards constructed response question number 2. Predict what would happen if a nerve connection broke. अगर एक nerve connection जो है इनका जो आपस का ताल्लुक है वो टूट जाता है तो क्या होगा? So kids, it's a very serious issue. अगर आपके एक भी nerve का connection जो है वो आपस में टूट जाता है तो आपको बहुत सीरियस इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. So the answer is, if a nerve connection broke, the messages between the brain and the body would not travel properly. Following things could happen. Loss of movement, आपका हाथ काम करना छोड़ सकता है, ठीक है, आपका पाँव काम करना छोड़ सकता है और इस तरह से कोई भी आपका बॉडी का पार्ट जो है जब उसको ब्रेन सही मैसेज नहीं पहुंचाएगी या सही रिएक्शन नहीं उससे उस तक पहुंचाएगी तो लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकती है, लॉस ऑफ फीलिंग हो सकती है कि आपको उस जगह पे कोई चीज महसूस होना खत्म हो जाए. टिंगलिंग और नमनेस, जैसे आपकी जब हम कहते हैं हम एक पोजीशन में बैठे रहें काफी देर तक और उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमारी जो वो पार्ट ऑफ बॉडी होता है हम कहते हैं कि वो सो गया. वो सोता नहीं है, उसमें बेसिकली जो आपके नर्व के कनेक्शन है उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है. ठीक है, उसके बाद जो मेजर इशू है और जो बहुत सीरियस इशू है दैट इज पैरालिसिस. ठीक है, अगर आपका नर्व कनेक्शन ब्रोक हो जाता है या किसी का नर्व कनेक्शन ब्रोक हो जाता है देन इट कैन लीड टू पैरालिसिस. ओके, जिसको हम फालिज भी बोलते हैं. Now, with this kids, we have completed our constructed response questions. Let's move towards investigate part. So in investigation, you have to investigate number 1, why a motorcyclist is advised to wear helmet. A motorcyclist is advised to wear a helmet because it reduces the risk of head injuries, which are very serious and can even be fatal, janleva, in a crash. Okay. Last question of our unit 2, human nervous system exercise is, a person met an accident in a car. एक इंसान क्या एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी में. When he was brought to the hospital, he did not know even his name. जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसे अपना नाम तक याद नहीं होता. What could have happened to him? उसके साथ क्या हुआ होगा? Relate your answer with reference to your nervous system. अपने आंसर को आपने रिलेट करना है नर्वस सिस्टम के साथ. So, इसका मोस्ट प्रिसाइज आंसर ये बनेगा कि a person who met with an accident cannot remember his name if there is a serious injury to his head during the accident. अगर उसके सर पे बहुत सीरियस चोट लगी है तो उसको अपना नाम तक याद नहीं रहेगा. स्पेशली cerebrum, the part that controls memory. Students, please do subscribe to the channel.